हेलो गाइस, मैं गुलशन कुमार एंड यूर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जी कबीर क्रिएटर। तो आज ये मेरे हाथ में है एप्पल मैकबुक प्रो विद M3 चिपसेट। वैसे तो एप्पल ने इसी वर्ष एंड ऑफ अक्टूबर में मैकबुक प्रो को M4 चिपसेट के साथ लॉन्च कर दिया है, बट मैंने उसे जस्ट एक मंथ बिफोर ही से खरीदा और इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी शूट करी थी, बट कुछ रीजंस के कारण मैं इसे शेयर नहीं कर पाया। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो शेयर करूंगा और इसकी बिल्ड क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर व लाइक भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एप्पल मैकबुक प्रो का बॉक्स। नाउ आई एम गोइंग टू अनबॉक्स इट। You can see they printed the MacBook Pro on the box और ये है कंप्यूटर and it's really very heavy. Let's check what accessories I got with it. I got USB-C to MagSafe 3 cable, 140 watt USB-C power adapter and booklet with 2 Apple branding stickers. Let's check the computer. This is Space Black Apple MacBook Pro M3 Max chip with 16-core CPU, 40-core GPU and 16-core Neural Engine, 128GB unified memory and 2TB SSD storage. Okay, now let's talk about the display. अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें, so here I got 16.2 inch Liquid Retina XDR display, 3456 by 2234 native resolution at 254 pixels per inch, with 1600 nits peak brightness and 120 Hz refresh rates. Now let's talk about keyboard. If I talk about the keyboard, so here I got backlit Magic Keyboard with Touch ID and ambient light sensors. Okay, let's talk about battery. Here I got 100 watt hour lithium polymer battery, which provides up to 22 hours Apple TV app movie playback and up to 15 hours wireless web, which made it more powerful machine in the world. You can charge it with 140 watt USB-C power adapter and USB-C to MagSafe 3 cable. Okay, let's talk about the build quality. We all know that the Apple known for its build quality. The whole frame of this laptop is made with aluminium and you can see it's very sleek design and it made it premium quality product. The weight of this laptop is 2.16 kg. Okay, let's talk about pricing. वैसे तो एप्पल ने इसे M4 चिप के साथ भी लॉन्च कर दिया है और मैंने इसे हांगकांग में बाय किया था। तो ये मुझे इस स्पेसिफिकेशंस के साथ, जो कि 128GB यूनिफाइड मेमोरी है और 2 TB की जो इसकी स्टोरेज है, इसके साथ 44,037 हांगकांग डॉलर का पड़ा था। यदि मैं इसको इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करूं तो ये आई थिंक ऑलमोस्ट 4,80,000 रुपए के करीब पड़ता है। And at the end of this video, I'll tell you this is really very powerful machine. How's my video? Please write down in the comment box. If you really like my video, so please like it, share it, and subscribe my channel. Thanks for watching.